So whenever we are observing the tongue, I will show you the entire case history. But first, look at the tongue. First, we have to see the tongue body. Then we'll see the tongue coating. And then we'll see the tongue shape. पहले हम देखेंगे टंग की बॉडी कैसी है, फिर देखेंगे कोटिंग कैसी है, और फिर हम देखेंगे कि इसका शेप कैसा है. लेट्स स्टार्ट विद द टंग बॉडी. तो टंग बॉडी का कलर कौन सा है? व्हाट इज द कलर ऑफ टंग बॉडी? ये टंग बॉडी का रंग कैसा है बताइए. टंग बॉडी लुक्स पेल एंड पिंक, राइट? Little pale and pink. Got it? Swollen looks, definitely swollen. That is the same. And if we see the tongue coating, अगर हम tongue coating की बात करते हैं, so how the tongue coating? टंग की कोटिंग कौन सी है? टंग पर कौन से रंग की कोटिंग? Some area having yellow coating, and definitely there is a coating is there. Coating is there, right? So dampness is there. Dampness तो है और heat भी है. So there is a dampness and there is a heat because the coating is there and look like a little yellow. थोड़ी कोटिंग पीली लग रही है ना, या कुछ दूध बूध पिया है, क्योंकि कुछ पीले पीले निशान भी हैं, right? So the second things look like tongue coating is having dampness and the heat. And regarding the color pale and pink, right? कलर तो कैसा है? पेल है और पिंक है. और कोटिंग पे येलो है. Now if we talk about the tongue shape, अगर हम shape की बात करें तो कैसी टंग है? How the tongue look like? Tongue look like swollen. Swollen tongue लग रही है ना? It's look like swollen, right or not? So tongue is swollen. So we can see here this, as per the TCM diagnosis, we can see this tongue look like swollen tongue in the shape, having pale pink color of the tongue, and as well as the tongue coating is yellow coating. It's telling the collection of damp heat. Now the patient is having problems of epilepsy. पेशेंट को तकलीफ क्या है? इपिलेप्सी की तकलीफ है और पेशेंट को इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चाहिए. The patient, so what will be the treatment for the epilepsy for this patient? तो TCM के अनुसार इपिलेप्सी के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे भाई? Got it? So number one, I told you damp heat. Number two, why I am telling swollen tongue?
लेकिन इपिलेप्सी क्यों हो रही है? इपिलेप्सी के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? So let's try to understand. So number one, we have seen the tongue of the patient, the swollen tongue. We have seen the body is pale red, but coating is yellow. Right. और क्या मिला हमें इसके अलावा? The patient is having, okay, we'll discuss all the symptoms one by one. So number one, patient is suffering with the epilepsy. This is the main concern and want the treatment of epilepsy. So the point number one, the tongue is showing very clear sign of damp heat. टंग को देखकर ये बिल्कुल पता चल रहा है कि डैम्प हीट है. And damp heat creating obstruction. Damp heat creating obstruction. Because flame is having nature of obstruction. फ्लेम का नेचर है ऑब्स्ट्रक्शन करना. दिस इज द नंबर वन थिंग, पहली बात. So the swollen tongue might be because of two reasons. The reason number one is dampness. Dampness creating swollen tongue. Dampness के कारण टंग फूल जाती है. And the second cause of the swollen tongue is yang deficiency. जो दूसरा कारण होता है swollen tongue का, वो yang deficiency होता है. So dampness is the cause number one, and the yang deficiency is the cause number two. Any might be present, either this might be present or this might be present, and we can see the very clear sign of the damp heat. So we are going with this first one, right? So the swollen tongue with a damp heat are there, blocking the flow of chi. ऊर्जा का फ्लो रोक रही है, blocking the flow of chi. Okay. And it is when the chi is not flowing properly, chi is not reaching properly. जब chi का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, chi हमारे ऊपर के पार्ट में ठीक से फ्लो नहीं आ पाती, इट डिस्टर्ब द माइंड एंड क्रिएट सीजर्स. ये माइंड को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं और सीजर भी कर सकती हैं. सो दिस इज द थॉट नंबर वन. नाउ द थॉट नंबर टू. Okay. This patient might be suffering with the spleen chi deficiency. इस पेशेंट को स्प्लीन chi deficiency होने की पूरी पूरी संभावना है. Let's see here in this image. We can see the teeth mark on the tongue. हम जीभ पर ये दांतों के निशान देख सकते हैं. We can see the teeth marks here. Can you see the teeth mark? क्या आपको दांतों के निशान दिख रहे हैं?
साइड में देखिएगा, ये देखिए कैसे दांतों के निशान थोड़े थोड़े टीथ मार्क. So teeth mark are the sign of spleen chi deficiency, and when the spleen chi is deficient, then only there is a formation of the dampness. तभी dampness का निर्माण होता है. तो एक दूसरी चीज हो सकती है कि इनको स्प्लीन ची की डेफिशिएंसी भी है. सो दिस द सेकंड थिंग, spleen chi deficiency. So spleen chi deficiency is responsible for formation of phlegm. फ्लेम का निर्माण हो रहा है. ओके ओके. सो अगेन damp heat formation. But then what we think for the epilepsy? Epilepsy का क्या संबंध है इससे? Epilepsy is the condition when there is fits, epileptic seizures. As per the TCM के अनुसार that is liver bind. TCM के आधार पर one. तो TCM के अनुसार, am I audible? इपिलेप्सी का कारण क्या है? कि लिवर बिंड हिलाकर रखिए. इसे कहते हैं लिवर बिंड स्टीयरिंग. लिवर बिंड स्टीयरिंग का मतलब होता है कि लिवर की वायु का हिलना, लिवर की वायु का उत्पन्न होना, राइजिंग ऑफ लिवर बिंड, कि लिवर बिंड पैदा हो रही है. तभी तो इपिलेप्टिक अटैक आएगा. बिना लिवर बिंड के इपिलेप्सी कहां से होगी? लिवर बिंड का होना जरूरी है. राइट. So when damp heat is there, spleen chi deficiency is there, and liver bind steering is there, then what will happen? अब क्या होगा? So because of that, flame will obstruct the orifices. Flame orifices को obstruct करेगा, and liver bind will trigger the seizure. So now look at in this tongue once again. If you look at here, if we divide the tongue in two parts, so this area is the gallbladder area and this area is the liver area. So it looked like, so liver heat is there and it's also affecting this part. Means it's affecting the brain and mind. If you see this tongue very properly, you will find here little elongated tongue. आपको थोड़ी सी जीभ बाहर ऐसे देखो निकली मिलेगी. elongated tongue, ऐसे जैसे बाहर से एक बड़ी हुई है. गौर से देखिए. So if you see this tongue like this, if we divide the tongue in two parts, this part is little elongated. So this is the gallbladder area and this is the liver area. So ultimately,
there is a rising of problem in the liver and gallbladder. Got it? So there is a combination effect. थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है. So there is a liver wind is stirring. Even we can tell gallbladder is also showing some heat. Ultimately, the main thing is the damp heat, spleen deficiency, and liver wind creating epileptic attack. So how to work on that? अब हम इस पे कैसे काम करेंगे? So number 1, resolve heat. सबसे पहले हीट को निकालो. ओके. और इससे भी पहले मैं बोलूंगा रिजॉल्व फ्लेम. सबसे पहले फ्लेम को निकालो और रिजॉल्व डैम्पनेस. डैम्पनेस को निकालो एंड रिजॉल्व हीट. राइट. First we have to work on the damp heat. And I can tell resolve flame. फ्लेम को भी निकालो. अब मैं एक बार लिख रहा हूं डैम्पनेस, एक बार लिख रहा हूं फ्लेम. So resolve dampness, resolve flame, resolve heat. What is the difference between dampness and flame? So dampness is heavy, like we can see the kapha, and the flame is very subtle. फ्लेम बहुत सूक्ष्म होता है. तो शरीर में दोनों है. डैम्पनेस भी है, फ्लेम भी है. फ्लेम उस घोस्ट की तरह है जो छाती पर चढ़ जाए तो भारीपन पैदा करता है लेकिन दिखता नहीं है. फ्लेम इज इनविजिबल बट स्टिल क्रिएटिंग हैवीनेस. But dampness is visible. Both are creating heaviness. So because I am using the flame, because this flame is obstructing the mind, ये mind को. So we have to resolve the dampness, we have to resolve the heat, we have to resolve the flame. So this is step number 1. Because the flame will block spirit. ये हमारी spirit को block करेगा. स्पिरिट को ब्लॉक करेगा, हमारे माइंड को ब्लॉक करेगा. फ्लेम विल ब्लॉक द माइंड बिकॉज फ्लेम इज वेरी वेरी सटल. राइट. और जो डैम्प हीट है, डैम्प हीट क्या करेगी? इट विल डिवाइड द बॉडी इन 3 पार्ट्स. अपर बॉडी, middle body, let's see here, upper body, middle body, and lower body. So flame will work here. It might work anywhere, but flame is obstructing the mind, obstructing the spirit. And dampness will be creating blockage here. Dampness यहाँ पर blockage पैदा कर देगी. It will not allow energy to free flow. Ultimately, we have to remove the flame. We have to remove the dampness. हमें dampness को निकालना है, flame को निकालना है. This is step number 1. So resolve flame, resolve dampness, resolve flame, resolve heat. Now reduce the liver wind. Liver wind को कम करो. Liver wind को कम करो and harmonize the shen of heart. हमारे हार्ट के शन को ठीक करो. Heart is the place of shen. The meaning of shen is the divine energy. So this is the treatment. Right? So how can we plan? हम कैसे प्लान कर सकते हैं? So number 1,
resolve the dampness. We can resolve the dampness by spleen 9 is the very good point for dampness. spleen 9 dampness को घटाने का बहुत ही शानदार पॉइंट है. Resolve the flame. Stomach 40 is the very good point for reducing the flame. ये फ्लेम को कम करने का बेहतरीन पॉइंट है. Then resolving the heat. Li 11 is the very good point for resolving the heat. Li 11 की मदद से हम heat को भी resolve कर सकते हैं. We can expel the heat out. Right. Then reduce the liver bind. So liver 3 is the very good point for reducing the liver bind. ये हमारी liver bind को निकालने का बेहतरीन point है. Okay. Then harmonize the strain of heart. हमें हार्ट की शेन को हार्मोनाइज करना है. So heart 7 is the very good point for harmonizing the strain of heart. It's the very good point. Okay. Now this is the concept number 1. ये हमारा पहला concept था. The concept number 2, we are resolving the flame. We are resolving the dampness. Stomach 40 is very good point, but pericardium 5 is also a very good point if we want to resolve the flame from the heart area, from the chest area. Stomach 40 is for overall, but pericardium 5 is a special point if we want to resolve the flame from the heart and bring the calmness in the heart. Pericardium 5. ये बहुत ही बेहतरीन point है. Got it? Okay. For the liver bind, definitely liver 3 is very good point, but gallbladder 34 is also additional point which will improve the effect. Gallbladder 34 is also calming down the liver bind. ये भी हमारी liver bind को calm down करेगा. तो चलिए हो गया. Now I told you the dampness is blocking the yang here. Yang is not able to rise. यानी वो जो yang force, एक फोर्स जो ऊपर तक जाना चाहिए वो ठीक से पहुंच नहीं पा रही है ब्रेन तक. जो ऊर्जा का फ्री फ्लो होना चाहिए वो ठीक से हो नहीं पा रहा है. So what we'll do in that epilepsy, we use DU20 and DU26 point also, and we do even method. So this is the protocol, and we can use this protocol. I will combine all the point here. ना अब हम सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं. So spleen 9, stomach 40, pericardium 5, Li 11, liver 3, gallbladder 34, DU20, DU26, and heart 7. So these are the points we are using in this condition. हम इन सारे points का प्रयोग इस condition में करते हैं. Generally with that point we add some auricular point also. हम कुछ auricular point भी add कर सकते हैं जैसे कि Shenman. We are using the Shenman point in the ear. We are using liver, spleen, and the brain point in the ear. That's it. इतना करें. It's an excellent protocol. It's an excellent way for doing the treatment. So this is the treatment of epilepsy in this condition where damp heat is there, when spleen chi deficiency is there, and these are the points. What do you think? What other point also can be added with this protocol? Whether the point of EOB or the point of TCM? और कौन से पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल में? बताइए जरा, आप लोग सोच के बताइए. ये हमारा प्रोटोकॉल तैयार है. इस प्रोटोकॉल को हमने साइंटिफिकली समझा है. राइट.
So what other point can be uses for this problem of epilepsy in this condition? Tell me. Any idea? I will tell you. This is the protocol you understood, but there are many other possibilities. और भी possibility है. हम कुछ और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं. तो पहले तो ये प्राइमरी प्रोटोकॉल को आप समझ लीजिए. अब कंसेप्ट थोड़ा डेवलप करने के लिए हम और भी समझ लेते हैं. व्हाट अदर पॉइंट कैन बी यूज्ड. So let's see now. First, you note down this protocol. So you should not forget this is the primary protocol for the patient having damp heat, spleen deficiency, and epilepsy. But other point we can use. So number one, let's think about the EOB. अब हम पहले EOB की बात करते हैं. Extraordinary vessels. So as per the extraordinary vessels, if we want to clear the damp heat, अगर हमें डैम्प हीट को क्लियर करना है, राइट. सो एंड इफ वी वांट टू वर्क ऑन द ब्रेन, और अगर हम ब्रेन पर काम करना चाहते हैं, वी वांट टू वर्क ऑन द ब्रेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द epilepsy. So we want to clear the damp heat. Damp heat is the condition which is excessive. ये एक excessive condition है. So we have to use gallbladder 41 and the triple warmer 5. This is the first couple. Tonification and sedation. We know this is on the master side and this is on the couple side. This is a very good point as per the EOB or the extraordinary vessels. We know the gallbladder 41 is the master point of belt meridian. ये हमारी बेल्ट मेरिडियन का girdle vessel का मास्टर पॉइंट है. It will clear the damp heat and will regulate the chi flow. It's a very good for epilepsy. यह epilepsy के लिए अच्छा काम करेगा, right? Yes. The second condition, we want to resolve the flame. हम फ्लेम को रिजॉल्व करना चाहते हैं. स्प्लीन 4 एंड पेरिकार्डियम 6. हमें स्प्लीन 4 और पेरिकार्डियम 6 को लगाना होगा. स्प्लीन 4 इज द पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन. इट इज द मास्टर पॉइंट ऑफ चोंगमो. ये हमारी चोंगमो का मास्टर पॉइंट है. एंड वी नो इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव. ये बहुत ही प्रभावकारी है. नंबर 1,
It will resolve the flame. ये flame को resolve करेगा. And number 2, Chongmo vessel is going like this. Chongmo vessel is going like this, right? It will calm down the shen. It will calm the spirit. क्योंकि ये ऊपर तक जाता है हमारा चोंगमो. जो लोग ईओबी पढ़ रहे हैं उनको पता है चोंगमो का रास्ता. There are 5 branches of the chongmo. One branch is going to the chest cavity, one branch going to the head region. So we can see this, the chongmo for flame. So number 1 for damp heat, number 2 only for flame. We have taken. So we can use this. हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, right? Other point we can use the same point what we discussed earlier. हमने जो point समझ लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं. These points can be added. इन points को हम add कर सकते हैं. So with the previous protocol we can add these points. Gallbladder 41, triple worm 5, spleen 4 and pericardium 6. This is the master point, this is the couple point, master point, the couple point, and we know if the female, then master point will be on the right side and the couple point will be on the left side. Okay, ये होगा. As per the master tongue, what we can do, master tongue के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? For the patient having damp heat, having spleen deficiency, and epileptic problems, the problem of epilepsy. Number 1, we can use Linggu Da Bai. Very good point. One of the great point. Linggu Da Bai आप जानते होंगे. Linggu Da Bai. And number 2, Shengguan. Shengguan is nothing but the point 1.5 tune down from spleen 9. हमारे spleen 9 से 1.5 चुन नीचे होता है Shengguan. Now we are demonstrating the point Linggu. So we can see this is the first metacarpal bone and this is the second metacarpal bone. The union of first and second metacarpal bone. This is the point Linggu. So we know the first metacarpal bone is representing full body. So if we found head here, middle body here, and lower part of the body there. So it can treat back pain and lower part of the body pain. In the same way, this second metacarpal also representing full body. So we can treat whole body here. The problem of the head region here, the problem of the middle part of the body from here, the problem of the lower part from there. So Linggu point is very effective for treating the lower back pain. It is very effective for the treating anything which is below the back, knee, heel, in these areas. Now, as per the master tone, they have done 2 types of imagination. One is normal imagination, one is inverse imagination. Now, if we do inverse imagination, so the same point is head. So now this bone again representing, this is head region, this is middle body, and this is lower part of the body. So in this way, this Linggu can treat the problem of the head or upper body part, like headache, migraine, anything which is in the upper part of the body. In the same way, this is first metacarpal bone, this is head region, this is middle part of the body, and this is lowermost part of the body. So now we are putting the needle in the union point or junction point of the both the metacarpal bone, first and second. So how to put the needle? Our needles will be very adjacent to the bones, like, so we will drawing, this is our first metacarpal bone, this is our second metacarpal bone, and this is the, here is the union point. So how we put the needle? Because we want to put the needle at the edge, adjacent, just side of the bones. So first we will pull the skin. Why we are pulling the skin? Now we are putting the needle. We are putting the needle. And then we will leave the skin. So this will go closer to the bones. So first we are pulling the skin, we are putting the needle,
then we are leaving the screen. So it will go a little closer to the bones. So this is the point, lingu. Now, if we measure from here to here, from the lingu, if we measure till the this knuckle of thumb, this is near about 1.2 to 1.5 this distance, near about. If we go at the same distance here, so this is our Da Bai point. So this is again 1.5, 1.2 to 1.5 trillion. So again we will pull the skin and we put the needle here. This Da Bai point is very effective for many conditions related to the large intestine, lungs, and very good for fever. So if we put these 2 point unit, this can resolve back pain, sciatica pain of opposite side. So if someone is suffering with any problem of the body from top to bottom, like someone is having headache, teeth pain, sinusitis, lungs problem, heart problem, gas acidity, indigestion, pain in the knee, pain in the ankle, calf muscles pain, anything, you just put Linggu Da Bai opposite side. So is it clear now? Linggu Da Bai clear? Madhavi ji? You can see this video in the YouTube. Yeah, so it's here on the junction of two bone. Here. If you go here, there's a junction of the bone. Put the point here. And this is near about Li3. Other point is like a Li3. If we follow the Li3, then go Li4 and keep going at the last, that is Linggu. So 2.1 here, 1 here. So now we can add Linggu and Da Bai also with the given protocol. हम इसी प्रोटोकॉल में अपना लिंगू Da Bai भी ऐड कर सकते हैं. तो हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल का निर्माण हो जाएगा. Got it? So this protocol will be very, very useful if the person is suffering with the seizures. Okay. Generally, if the person is having seizures in the morning, then we are telling excessive type of epilepsy. If the person is having seizures early in the morning, early morning hours. ऐसा एक जनरल बात कही जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को सीजर होते हैं in the early morning hours, then we are telling them that is the seizures of excessive type. तो हम कहते हैं कि भाई ये excessive type के सीजर हैं. Got it? And then we are using certain points. फिर हम कुछ points का प्रयोग करते हैं. So I will tell you, as per the master tongue acupuncture also, we are having some different combinations. different combinations हैं, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने मास्टर टंग नहीं सीखा है तो फिर आप दूसरे पॉइंट्स का प्रयोग करिए. Got it? Fine. If the epilepsy is happening in the late afternoon, अगर दोपहर को epilepsy होती है या शाम को epilepsy होती है तो हम उसे deficient type के पैटर्न में रख सकते हैं. We can keep it under the deficient type of epilepsy. If it is happening in the afternoon time or the evening time, तो हमें क्या करना होता है, हमें टॉनिफाई करना होता है. फिर हम स्टमक 36, स्प्लीन 6 इनको टॉनिफाई करते हैं. थोड़ा सा हमें ऊर्जा का स्तर बढ़ाना होता है. दिस इज एज पर द मास्टर टूम कंसेप्ट. तो मास्टर टूम का एक कंसेप्ट है, लेकिन आप इसी को फॉलो कर सकते हैं जो हमने अभी आपको बताया, और इसको फॉलो करके आप एक अच्छा सा प्रोटोकॉल बनाकर अपना खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. I will tell you some point of the master tone. You can search and you can put the point.
क्योंकि एक एक पॉइंट का लोकेशन बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन द मास्टर टंग एक्यूपंक्चर, व्हाट वी आर डूइंग फॉर इपिलेप्सी, हम इपिलेप्सी के लिए क्या करते हैं? बिकॉज मास्टर टंग एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट आर वेरी मच इफेक्टिव. So we are dividing in the epilepsy two category, excessive type and deficient type. हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस आधार पर आप इसे दो पार्टों में बांट सकते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द excessive टाइप ऑफ epilepsy. तो सबसे पहले लेट्स सी excessive टाइप ऑफ epilepsy. So for that, there is a point 55.06, or it is called upper tumor point. इसका नाम ट्यूमर भले ही है, लेकिन एक काम करता है, ये डैम्प हीट को निकालता है. इट्स रिजॉल्विंग द डैम्प हीट. दिस इज द पॉइंट, रिजॉल्विंग द डैम्प हीट. कहां पर होता है, कौन बताएगा? What is the location of what is the location of 55.06 master tongue acupuncture point? Do you know that? पैर के तलवे में होता है, ये पता है, क्योंकि 55.06 master tongue acupuncture point. I will show you the location. Let's see here. So this is the location of this point. ये किडनी 1 के थोड़ा सा पास में होता है. अभी मैं आपको अपने पैर में दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इमेज आ जाएगी. Yeah, I will bring the image here. ये पॉइंट है, ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं अपर ट्यूमर पॉइंट. यहाँ पर जहां पर एडी खत्म होती है. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर epilepsy. 55.06, right? The second point, as per the master in the excessive type of epilepsy, is there is a 77.08 and the 77.09. They are called four flower point. Four flower upper and four flower middle. ये कहाँ होता है? Do you know that? पता है आपको कहाँ होता है? So this is very near to stomach 36. और इसके नीचे आप इसकी लोकेशन देख लेना. It is very very effective as per the master tongue for epilepsy. The third point is 77.05 and the 77.07. These are in the gallbladder meridian. हमारे पैरों, हमारे एंकल जॉइंट के पास 77.05 and the 77.07. They are the very good points. These points, actually there are 3 points. 77.05, 77.06, 77.07. They are called 3 beats. इन हम 3 बेट क्या, आप गूगल में डालोगे तो भी मिल जाएगा आपको. ये हमारे लगभग ये गॉलब्लैडर 39 के पास होता है.
फिर और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, तो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, राइट। सो यू कैन ऑल्सो चूज इंटरमिटेंटली दीज पॉइंट्स विद अदर पॉइंट विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, जो हमने बाकी पॉइंट डिस्कस किए हैं। यानी मास्टर टूम के अनुसार हम ये पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड दिस पॉइंट एज पर द मास्टर टूम, गॉट इट। मास्टर टूम के अनुसार these points are very very effective for excessive type of epilepsy. For deficient type we have to do the nourishment. Deficient type में हमें nourishment करना होगा, पर आपका पैटर्न तो excessive type का ही है as per your tongue, so you have to work accordingly. I think it's clear. माधवी जी क्लियर? कर लेंगे ट्रीटमेंट? कर लेंगे? क्वेश्चन? यस, यस प्लीज, हाँ बोलिए। सर उसका तो कोई निश्चित समय नहीं रहता है ना कि ये टाइम आएगा वो टाइम आएगा एपिलिप्सी का। इसलिए मैंने आपको एक जनरल बात है, इसको भूल जाइए आप। हाँ उसका एक मास्टर ट्यूब ने कहा ऐसा, ठीक है, उसका हाँ लेट गो कर दीजिए, कभी टाइम कब भूल जाइए ना। हाँ। इसलिए हमने मास्टर लेकिन ट्यूब वैसे दिया। तो मॉर्निंग में ही ज्यादा रहता है। हाँ वो एक्सेसिव टाइप का है, वो तो जीप देख के ही पता चल रहा हाँ मॉर्निंग में ही कभी सुबह 3 बजे, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे ऐसा रहता है। और कभी 18 साल के बाद आता है, कभी 10 साल के बाद आता है, कभी 4 साल के बाद आता है। ऐसा रेगुलर तो नहीं है ना सर। है। हाँ जी, वो एक्सेसिव टाइप का ही है ना। हाँ एनीवे। जैसे किसी को और डैम्पीट कोई होती, ऐसा ये भी नहीं है कि चलो कोई टेंशन है कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। टेंशन ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है, टेंशन होगी तो ये कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने टेंशन से एपिलेप्सी आती है ऐसा किसने बोला? बिना टेंशन वालों को एपिलेप्सी नहीं आती क्या? है ना। हाँ। कोई लेन देन टेंशन से कोई मतलब नहीं। और यानी टंग और टीथ दोनों में जबरदस्त इंजरी हो जाती है। हाँ हाँ, हो सकती है, वो जब डैम्प हीट रहती है ना, तो हाँ उसमें हाँ गंदगी बढ़ती है, गंदगी फैल जाती है। डैम्प हीट मतलब हाँ एकदम हाँ डैम्प हीट दोनों बढ़ी हुई हैं, है ना। हाँ। करना पड़ेगा। ओके सर। और सर कितने दिन तक रेगुलर, यानी मैंने क्या ऐसे क्या पीरियड नहीं आया था, इसकी वजह से स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 और बीच में वो लगाते हैं ना सर वो, और LI4 ये लगाया, और फिर दूसरे दिन ही ऐसा हुआ। तो तो आपको इसका कोई अपनी संबंध हो सकता है? हो सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि उससे आया कि, क्योंकि अगर आपके सिम लक्षण देखें तो आपके शरीर में डैम्प हीट तो है ही, वो तो आपकी जीभ से ही पता चल रहा है। वी कैन सी द टंग एंड वी कैन फाइंड आउट दैट यू आर हैविंग डैम्प हीट। हम्म। और सर ऐसे बीच में गैप देना चाहिए या कितने दिन करना चाहिए? गैप तो जरूर देना चाहिए। जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो तो हम्म आपको एक ट्रीटमेंट किया, फिर एक दिन का गैप दे दिया, फिर एक ट्रीटमेंट किया, ऐसे कुछ ट्रीटमेंट कर दो। और आपको तो अपने खुद ही आप ऐसा कहीं जाना तो है नहीं आपको, नहीं। जाना नहीं है आपको, तो आप थोड़ा और गैप करके ट्रीटमेंट करो, एक दिन करो फिर 2 दिन मत करो, फिर एक दिन करो फिर 2 दिन मत करो, ऐसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। यानी शुरू में आप 2-3 दिन 2-3 ट्रीटमेंट कर लो, लगातार लगातार कर लो, बट डोंट डू एक्सेसिव ट्रीटमेंट, because if you do the excessive treatment is bad for epileptic patients. एक्सेसिव ट्रीटमेंट करने से इपिलेप्टिक सीजर्स बढ़ सकते हैं। तो आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो एक किया, फिर गैप कर लिया। मास्टर टूम के जो 3 पॉइंट है ना, जो मैंने भी बताए, पैरों में 3 वेट्स, 77, हाँ 05, 06, 07, वेरी इफेक्टिव। वो एक्सेसिव चीज को काम डाउन कर देता है। आई विल सजेस्ट यू कि आप क्या करिए, वीक में आप एक ट्रीटमेंट मास्टर टूम का कर लीजिए और एक ट्रीटमेंट TCM का कर लीजिए, बस बहुत हो गया। और एक 6 महीने का टारगेट बनाइए, है ना। हम्म लेकिन अगर मैं आप बोल रहा हूँ, अगर आप निडल लगाते हो
अगर हाँ आप लगाती हूँ। निडल लगाते हो ना, ठीक है, तो निडल लगाते हो तो शुरू में आप भले ही अभी 3 से 4 ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी कर लेना। एक दिन मास्टर ट्यून किया, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन टीसीएम कर लिया, फिर एक दिन मास्टर ट्यून किया, फिर एक दिन छोड़ के एक टीसीएम कर लिया ना। फिर अगले वीक से, एक आध 2 वीक के बाद से आप क्या करिए कि वीक में 2 ही ट्रीटमेंट करिए बस। और एक 6 महीने का प्लान बनाइए, धीरे धीरे ठीक होइए, परमानेंट आराम मिलेगा आपको। और इट्स नॉट ओनली अबाउट द एपिलेप्सी, आपका पूरा बॉडी बैलेंस होगा, बिकॉज दिस प्रोटोकॉल इज नॉट जस्ट फॉर वन प्रॉब्लम, दिस प्रोटोकॉल फॉर योर एंटायर पर्सनैलिटी, आपकी सारी पर्सनैलिटी का प्रोटोकॉल है ना। इसलिए तो हमने आपका पूरा पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझा है कि डैम्प हीट बढ़ी हुई है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। वो बचपन से है सर, स्प्लीन सी हाँ हाँ हाँ, डेफिशिएंसी, हाँ बचपन से होगी आपको, बचपन से ही Yes, है वो। बचपन से ही है। और इसीलिए पचन भी नहीं होता सर, यानी खाना ही नहीं पचता है, ऐसी बात हाँ है। जी, इसीलिए आपने अपनी जीभ पहले देख ली होती, आपने अपने लक्षणों को पहले एनालिसिस करके उसे ठीक कर दिया होता, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपना थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे समय रहते ठीक करने की करना चाहिए। अब आपके शरीर में इतनी डैम्पनेस है, इतनी हीट है, तो थोड़ा सा आप कुछ प्रोटोकॉल लगाइए ताकि आगे चल के कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो आपको। यस सर। इसको करिए आप, फिर आपको कोई होगा तो मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं, ठीक है। सर मास्टर टून का यानी इसमें यूट्यूब में मिल जाएगा सर ये पॉइंट, सब मुझे लोकेशन? हाँ, ये सारी जितने भी पॉइंट्स हैं आप गूगल में डालना, गूगल में, यूट्यूब में मिल भी सकता है, नहीं भी। पहले यूट्यूब में ढूंढना, अगर ना मिले तो लोकेशन डालना, और ढूंढना फिर भी ना मिले तो मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके। Okay, चलिए, तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर हम विराम देते हैं। और जब भी आप थैंक यू सर। किसी भी, यस वेलकम, किसी भी डिसीज का प्रोटोकॉल बनाते हैं तो पहले डायग्नोसिस करके बनाने की कोशिश करिए। सर और एक और सर, एक और सर। हाँ, सर इसमें कोई दवा नहीं ली एलोपैथी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि मैं आज तक तो कोई दवाई लेती ही नहीं हूँ। अच्छा, देखो, आज तक कोई दवा नहीं ली है तो मैं बोलूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट कभी भी पेशेंट को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सारी दवाइयाँ बंद कर दो एकदम से, है ना। क्योंकि कोई भी हम्म। दवा धीरे धीरे बंद करना चाहिए, लेकिन आपने ली नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हाँ सर। ऐसा वैसा चलने दीजिए, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन, सो थैंक यू सो मच, एंड विल डिस्कस, अगर और लोगों की कुछ क्वेरीज हैं सो विल ऑल्सो डिस्कस एज सुन एज आई गेट द टाइम। लेट्स क्लोज द सेशन, गुड नाइट।